Immigration. Yes, yeah. तो अभी अभी जो आपने क्लिप देखी उसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स डिटेन कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स को। तो रवांडा बिल पास हो चुका है, रवांडा बिल इम्प्लीमेंट होने वाला है। कब पहली फ्लाइट जाएगी ये तो अभी डिसाइडेड नहीं है, बट ये बिल अब पॉलिसी बन चुकी है, अब लॉ बन चुका है यूके में। तो जो लिस्ट है इलीगल इमिग्रेंट्स की वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली गई है कि पहली फ़्लाइट में कौन से ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो रवांडा जाएंगे, और उन्हीं सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को अब डिटेन किया जा रहा है। जब तक पहली फ़्लाइट नहीं जाएगी रवांडा के लिए तब तक इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, और उसके बाद जैसे ही पहली फ़्लाइट जाएगी वैसे इनको तुरंत रवांडा भेज दिया जाएगा। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि रवांडा बिल क्या होता है, ये पॉलिसी कब पास हुई, इस पॉलिसी के अंडर कौन से ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको रवांडा भेजा जा सकता है, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। अब उस वीडियो में मैंने ये भी बात की थी कि कैसे जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनको टाइम टू टाइम होम ऑफिस के साथ अपॉइंटमेंट्स के लिए जाना होता है, और अगर वो रवांडा जो पहली फ्लाइट जाने वाली है उस लिस्ट में उनका अगर नाम है तो उनको अपने होम ऑफिस के अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही डिटेन किया जा सकता है। अब ये सिचुएशन अगर आपके साथ होती है तो इस सिचुएशन में आप क्या क्या कर सकते हो, आपके क्या क्या राइट्स हैं, इस बारे में भी मैंने यहाँ डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में बात किया है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। तो अगली क्लिप में आपको वही दिखाने वाली हूँ जिसमें एक इलीगल माइग्रेंट जो होम ऑफिस के साथ अपना अपॉइंटमेंट के लिए गया था, उसको उनका नाम था ऑलरेडी रवांडा की जो फर्स्ट फ्लाइट जाने वाली है उस लिस्ट में, और वो जब अपने अपॉइंटमेंट के लिए गए तो उनको डिटेन कर दिया गया। वो ऑलरेडी 2 साल से यूके में इलीगली रह रहे थे, बट उनका नाम अभी आ गया था जो फ्लाइट जाने वाली है रवांडा के लिए उस लिस्ट में, और उनको इमीडिएटली डिटेन कर दिया गया जब वो अपने अपॉइंटमेंट पे गए होम ऑफिस के साथ। He's my brother. As asylum seekers were taken away in handcuffs, protesters sang their support for the men. It was filmed by a friend of the man just about to be led out. He was loaded into an immigration detention van. He'd come for his regular fortnightly appointment at the Home Office building in Loughborough when he was detained. His friend drove to the centre when he realised he hadn't returned home to Derby. Since he was taken away, his friends have been trying to keep in contact with him from inside the detention centre near Gatwick Airport, where he's being held. As we were filming, he called. He agreed to speak to me. We've changed his name to protect his identity. How is he feeling? الان چه احساسی داری ایمان؟ الان واقعا احساس کنم که چون پایان خط رسیدیم. He's feeling so bad. He's just feeling like in prison, in jail. And where is he? تری با من بگی کجانی الان بران؟ آره یه ساختمون مال سرکوه نام همون چسبیدی یعنی تو فرودگاه گتویه. Broke house in Gatwick, as he said. It's cut out. Yeah, because he need to top up. His detention has left his friends in shock. Originally from Iran, he'd been in the UK for almost 2 years. When I saw him, that was awful. With handcuff, and I think nobody deserved that to have this situation. Did he know he was at risk of being sent to Rwanda? No. He's a nice guy. He doesn't do any bad things actually. And you know, when I saw him like that, I was so upset. I started to crying.
The Home Office announced earlier this week that it had begun detaining people due to be sent to Rwanda. Charities say they're hearing from more and more people who've been taken to removal centres. How many people have you been contacted by from detention? Probably around 10, I would say. 10 just in people the- in that the you last already few days. know Yeah, have been detained. yeah. They've just been told that they will be removed to Rwanda. No timescale. No timescale. It's making asylum seekers across the country uneasy. They're worried who will be next. Becky Johnson, Sky News, Derby. अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अगर आप ऑलरेडी एक इमिग्रेशन सॉलिसिटर को आप अपॉइंट करके रखोगे पहले से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो होम ऑफिस के इस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है। अब जब से यूके की गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन को कट करने की बात की है, इमिग्रेशन को कट करने के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं, तब से इमिग्रेशन चेक्स भी काफ़ी ज़्यादा रिजिड कर दिए गए हैं। पहले भी ये चेक्स होते थे, बट अब इन चेक्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाने लगा है और ये इनको बहुत ज़्यादा रिजिड कर दिया गया है। तो टाइम टू टाइम इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो है जगह जगह रेड डालते रहते हैं। जहाँ भी उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से रेड डालते हैं और उन इलीगल माइग्रेंट्स को वो अरेस्ट कर लेते हैं। अब अगली क्लिप में आपको यही दिखाने वाली हूँ कि कैसे ऑक्सफोर्ड में एक बार्बर शॉप है जिसपे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने अनएक्सपेक्टेड तरीके से रेड की और वहाँ पे उन्हें जो इलीगल माइग्रेंट्स काम करते हुए दिखे, उन्होंने उनको तुरंत अरेस्ट कर दिया। Heading into this suburb of Oxford, these immigration enforcement officers are en route to raid a local barber shop. It's suspected of employing illegal immigrants. Part of a growing phenomenon where these high street businesses are being increasingly exploited as fronts for criminality. These officers are looking for an Albanian asylum seeker who's absconded and believed to be working here. While there's no trace of him, they have detained this Colombian man, another asylum seeker working here in breach of employment laws. As officers continue to search this business, the Albanian owner arrived. He now faces the prospect of a much higher fine, with tougher penalties for businesses introduced this week of up to £45,000 for each immigrant caught working illegally. Immigration enforcement raids are up by nearly 70% last year. That's a huge increase. And talking to the illegal enforcement team here, they've been ramping up in the West Midlands as well. You can really sense it. You can sense the work they're doing, and that work is going to continue. Across the country, the number of barber shops has exploded, almost 18,000 in total, up 50% in just a few years. While most are perfectly legitimate and a valuable addition to the high street, sources have told us that increasing numbers of barber shops are fronts for criminality. Billions of pounds from the proceeds of crime are laundered through these businesses, which don't just employ illegal immigrants, but are often involved in modern slavery, coercing and threatening victims of human trafficking to work for little to nothing. There is broader organised crime behind this. These sorts of premises do not pop up overnight without money behind them. And it's really important that we work with agencies such as National Crime Agency, such as policing, such as HMRC and other government departments, to ensure that the weight of all the government's powers is brought to bear on those who seek to exploit vulnerable individuals. Nail bars and car washes have long been associated with criminal gangs, often employing and exploiting illegal immigrants. But sources say barber shops are rapidly overtaking them as a front for criminality. The authorities are keen to reiterate that the majority of barbers are legitimate and law-abiding, but they say they won't hesitate to go after those they suspect of breaking the law. Mark White, GB News. तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।